Do you know about this body positivity movement? No, I've never So, heard. so, so there's a thing like पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि there are Mm-hmm. people who is like कि you accept the way you are, love the way you are. Yeah. Sounds like it's a good thing, but at the same time, the all obese people, they're actually using this as an excuse and just staying the way they are, even though के health पे implications आ रही है, but फिर भी they choose to stay obese. They choose to because of this body positivity movement, जहाँ पे like I love myself, मुझे इस तरीके से बना है एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए एंड दे आर लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा बर्गर ऑन कैमरा एंड दे आर लाइक आई एम जस्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ. Okay. What do you think about this? I think it's honestly their loss because in the long run अभी तो वो कर रहे हैं like देखें एक narrative को बिल्कुल out of context ले जाना वो फिर आपकी गलती है ठीक है. To love your body, to respect your body is the way I did it. Okay, I worked on myself. You came in my life. You taught me how to do it. I worked out. I built muscle. I'm an active mother. I know that I will be one. If my child has a child, I will be present to help her, okay, in every sphere of her life. I am doing this not only for myself, but to be healthy for my child, for my grandchildren. You know, be in a position कि after शायद मेरे और भी बच्चे हों और वो शादी होके रुखसत होके अपने घरों में मूव हो जाए, me and my husband can live our life again the way we did before our children. Travel the world, enjoy our life, eat good nutritious food. So how many of those obese people can travel or Oh, amazingly, they travel and then they complain कि वो plane की सीट में नहीं fit फिट आ नहीं आ रहे रहे थे. हैं. And I So was like, okay, it's your choice. You want to be like this, उनका right? माइंडसेट ही यही है. No, I also think कि we are living in a world today जहाँ पे आपके इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी से. आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है ओबिसिटी की वजह से. आपके रिसेंटली आई थिंक a month or 2 months back a 24-year-old guy died because of obesity, Oh my God, heart attack, that's so sad. and he was a influencer. That's so sad to hear. And what he and how he influenced people, he would eat pizza, burgers, all kind of junk in front of camera, and he was like telling people, you don't have to do this, just love yourself, eat whatever you like. These kind of stuff he was influencing. तो I think these इस तरह का influence होना नहीं चाहिए. You do whatever you want to do in your life. It's Yeah. your life. But at the same time जब आप influence करने लग जाते हो दूसरों को, and I think I believe in psychology, but at the same time psychology can be used in a lot of different ways. सही है. तो यहाँ पे अभी the world is going into that place के जहाँ पे आपके shitty behaviors को भी validate करके वो आपको भेज देते हैं वापस. नहीं देखें वही वाली बात आ गई ना. आप 3000 बैड कैलोरीज भी खा सकते हो लाइक फ्रॉम दैट्स कमिंग फ्रॉम जंक एंड व्हाटएवर, बट यू कैन हैव 3000 क्लीन कैलोरीज टू जो कि आपकी बॉडी को एक तो ज़्यादा खाना होगा ठीक है, उसमें आपको क्वांटिटी पोर्शन भी ज़्यादा मिलेगा, यू विल बी सेटिस्फेटेड. बट वो उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे ना. तो वो फिर उनका लॉस है ना. These वो उनका people- माइंडसेट है. आप ऐसे लोगों का माइंडसेट जो है वो नहीं चेंज कर सकते unless they want to do, you know, you cannot force somebody to do anything. You know, you can only tell them what's right for them, but that is up to them if they want to conceive that information and work on it, or hear it from one ear and take it out of the other ear. So there is no point. I know हम जैसे अपनी माओं को भी बोलते हैं कि you know mom why don't you eat this, or dad why don't you eat this, this is good for you, ये वो फलाना. कहते हैं नहीं यार हम रोटी सालन में सही हैं, लेकिन हम इतना सही तो खाते हैं तो हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है? Why? Because you're not having the correct amount of nutrition. You know, you're not having your fats
according to your body, you're not having the carbs according to your body, and you're not having protein at all. वो दो हांडी में से दो बोटियां निकाल के दे जिससे हमारा प्रोटीन तो पूरा हो गया. हाँ यहाँ पे दाल खाने के बाद आई थिंक हाँ प्रोटीन खाए ना, दाल चावल खाए, प्रोटीन ही प्रोटीन है, मेरी बॉडी बन रही है. भाई देखें, इट्स वेरी सिंपल. What's going to happen is you're cutting your life short by many years if you're not changing your lifestyle.